Shahrukh said it's an honor and a privilege. There was only one name that was left in my little book of having done a show with for a while. So thank you so much for this opportunity. And I have to say, your stardom grows as much as the scale and everything. It's always so brilliant. So when you see your films, when you see the trailer, can you ever be objective about it sometimes? Are you able to, do you smile inside as well? At that point of time, do you feel just happy that it's all over and it's all looking lovely and big? Not really, you can't. Actually, it's a feeling of emptiness. जब फिल्म बन जाती है, सब इतने अच्छे लोग, सबने इतनी मेहनत की. So actually today it's kind of sad when you present your film outside to the world, because उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्म हमारी नहीं रहती. And so भी हमारी नहीं रही है. तो हम चाहेंगे कि जब ये बाहर आ गई है तो जितने भी लोग इसको देखें उतना ही प्यार करें जितना प्यार से हमने उसको बनाई है. So it's I always say it's like giving away a daughter. So it's that kind of a day. I cannot sit down and watch it and get happy and कि हमने कुछ कमाल कर दिया. कमाल हम नहीं करते, कमाल वो करते हैं जिनको फिल्म अच्छी लगती है देखने के बाद. So hopefully we worked hard and we'll make sure it goes through once again and people like it, because in a certain sense Rohit and me have worked together, but most of the people here who are friends and colleagues for years, I feel a little responsible that I should not let them down in this film. Not because I'm the star of the film or something, but because somewhere I've got the team together. So I wish that I make sure that everybody is happy, especially Pritam Tha. He's done 2 romantic songs for Shahrukh and Kajol. Uski to what like. And he wore a suit. Yeah, and suit. And just a second, because the way we came, हम थोड़ा गुम गए थे. तो हमारे जो writers हैं film के, साजिद और फराद यहाँ पे हैं. So I'd like to call them on stage. Yes. Please come. हालांकि हमने सूट नहीं पहना है. Hello, sir. ज़्यादा फिट मत होना, सके मिल जाएंगे हम लोग. And keep tweeting those photographs of your son. We love them. I've been told not to tweet them anymore, यार. No, I think they're fantastic. वो साला मुझसे ज़्यादा famous होता जाता. All right, ladies and gentlemen, I open it out to the entire press here. We can start with as soon as I see a hand up. Just say your name and the question you want to Yes, ask please. the actor or the director, खान technician. साहब, मेरा नाम आलोक है, वही फिल्म आस्ते सर. मुझे मालूम ही नहीं पड़ता था कि आलोक है कि तूने बताया नहीं बता. सर, डी से डॉन भी हुए, डी से देवदास भी हुए, अभी डी से दिलवाले भी आ चुके हैं. आपके हिसाब से, आपको लोग दिलवाला कहते हैं, आपके हिसाब से कौन होता है दिलवाला आपके हिसाब से? हमारी फिल्म का भी वही मीनिंग है एक्चुअली. ones who can forgive, forget and move on, and होल्ड नहीं करते, एरोगेंस नहीं रखते, ईगो नहीं. तो गलत हो गया, मैं तो सब कुछ हुई है. But people who have large hearts are the people who can forgive, forget and move on and love each other. I think that's as simple as that. I saw a hand. Yeah. Hi Shahrukh. The trailer looks great. I mean, absolutely fantastic. Just introduce yourself. Yeah, I'm Arjun. I'm from International Business Times UK. My question is, how many references to Dilwale Dulhania Le Jayenge are there in this film? ये रेफरेंस जो है, इससे बड़ा रेफरेंस और क्या हो सकता है? Because Chennai Express, your last collaboration with Mr. Rohit Shetty, उसमें भी there was a sequence where you were bringing those goons on board the train and आपने कहा कि ये मैं पहले कर चुका हूँ, and similar kind of scenes or dialogues in this film as well for the fans who would want to kind of see. Actually, it's very first. Kajol, me feel very honored. Director of Rohit's caliber, one of his favorite films is Dilwale, and to say it again that one of the favoriteest directors that Aditya Chopra has, who's made Dilwale, is Rohit Shetty. So it's a strange kind of a mutual admiration without them actually meeting each other or talking about each other. तो वो दोनों इतनी, मैं जब भी अलग-अलग वक्त पे दोनों को मिलता हूँ, तो एक दूसरे की इतनी तारीफ करते हैं, just for the work each has done. I think that respectability and respect for work. So somewhere down the line, I think just for the fun element, we had it in Chennai. और इसमें तो हम ही हैं यार, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, कौन सा रेफरेंस हो सकता है? And then we took it seriously in Dilwale. Yeah. Alright, thank you. हाय शाहरुख सर. सर सुबैकिया. सर मैं दिल्ली से हूँ. Hi Subhagya. सर थैंक यू सो मच. सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर. मतलब मैं आपको बता नहीं सकता. मगर बताएगा ज़रूर ना फिर. एक बार आपको हक करना चाहता था. अच्छा, वो हम दूसरे थिएटर में कर लेंगे. दूसरे थिएटर में हक हो जाएगा. सर मेरी फूटी किस्मत लड़के याद करते हैं मेरे को सिर्फ.
Sir, I'm also trying in film industry. So just give me a Wow, an open audition call. just give me a clue because Sweet. Okay, so we'll move on to the next. Doing what you're doing here. God bless. Hi Shahrukh, in the center. Anita here from BNS. Shahrukh, with every film you raise the bar, and recently Varun said that this film will make Indians proud at the global level. What do you have to say on that? Actually, as a part of Red Chillies, I'll just talk about Red Chillies and Rohit Shetty Productions. Raising of the bar is by the creative team. Rohit's team, actually, who's always behind the scene, and Red Chillies team, who are helping to take the vision a little further than what we have. And inshallah, I don't know, film jab aayegi, humne koshish bahut ki it has elements of what an international quality film should look like, with a family feel, the heart of Indians. It's actually a family happy comic film coming on the right time. But beyond that, everything else in terms of the technology and the technique of the film, sound, everything should be international. I think that credit goes to Rohit. So हमने कोशिश की और inshallah it will always be a step up from the last film. Hello, Shahrukh here. Left. You're known to be a marketing guru. With every new movie, you have come up with new promotion strategy and new tie-ups. Can you tell us something about the promotion? What new tie-ups can we see? ये थोड़ा मिसनोमर है यार. मुझे मार्केटिंग का इतना मालूम नहीं. हमारी टीम है, मनीष, करुणा और रेड चिलीज की, तो वही लोग करते हैं जो करते हैं. मैं जैसे फिल्म का श्रेय मैं सारा का सारा ले जाता हूँ जब वो हिट हो जाती है, वैसे मार्केटिंग का भी मैं ले जाता हूँ. सो देयर इज नथिंग दैट वी डू. हमारी जो फिल्म की बिलीफ होती है, जो फीलिंग होती है, दैट्स व्हाट वी पुट फोर्थ टू द ऑडियंस. दिस, लाइक आई सेड, फैमिली फिल्म है, एक हैप्पी फैमिली फिल्म है, खुशगवार फिल्म है. सो वी विल जस्ट टेल पीपल टू इन्फॉर्म एवरीवन कि इसमें जो है खुशी होगी, और एक ड्रामा है इस फिल्म के अंदर, एक इश्यूज बिटवीन a family and a lot of comedy, as you would have noticed. So all that is going to be is what we just go and tell people. मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केटिंग का मतलब ये है कि लोगों को इन्फॉर्म करना है कि हमारी फिल्म किस बारे में है, क्योंकि इतना महंगा टिकट लेकर आ रहे हैं, उन्हें पहले मालूम होना चाहिए. Beyond that, there is nothing special. Tonight is special कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, फैंस आए हुए हैं फिल्म देखने के लिए. एंड जब भी हम कोई बड़ा इवेंट करते हैं जैसे ये है, या जब भी करेंगे इंशाल्लाह, the idea is we are celebrating the release of a film. Actually, we're doing nothing more special than that. And if any credit has to go, then it has to go to the marketing team which puts the law up. मुझे idea बोलते हैं, हम कहते हैं पहुँच जाएंगे, हम अपना black suit पहन के पहुँच जाते हैं. मेरे को मार्केटिंग नहीं पता, तुम टिकट प्राइसेस पूछने लग गई हो. मैं तो बहुत साल हो गए थिएटर में पिक्चर देखे हुए मुझको, और मैं जब भी आता हूँ मुझे टिकट का पैसा ही नहीं लेते वो लोग. So I don't know. I don't think so. I think first time हमने step लिया है कि हम फिल्म को distribute खुद कर रहे हैं Red Chillies के through. So let's see how it goes, and we'd not like to do it. We'd like to keep it as simple as possible. And now we can continue with the questions. Hi Shahrukh, this is Urvi here to your right. Right, sir. Hi, ma. Shahrukh, last night you dub smashed to Prem Ratan Dhan Payo song, and so did Salman did to Dilwale. Was it impromptu that you all decided to just delegate a song? Actually, I think they were all sitting at home, and Salman called me and he said, क्या कर रहा है तू? I said, हमारा भी रैप हो, actually हमारी फिल्म रैप हो गई थी रात को, तो हम लोग सब डिनर कर रहे थे ऐसे ही. वी से भी जस्ट बिकॉज रोहित हमको काम कराते रहते हैं, पार्टी नहीं करने देते. सो आखिरी दिन हमको मौका मिलता है जब हम इसको पूरा मिसयूज़ कर सकते हैं और रोहित को जगा कर रख सकते हैं. और हमारा एक्सक्यूज़ ये होता है कि सुबह जो है हम ड्राइव करने की हालत में तुम हमको लेकर जाओगे तो तुम्हें हमारे साथ पार्टी में रहना पड़ेगा. So this is the best excuse with Rohit because he doesn't party at all. So Salman called and he said, yeah, तेरा poster release हो रहा है, so I'd like to do something for you and Kajol, and we'd like to do the song which Pritam Da has done. So I said, वो गाना अभी तो release ही नहीं हुआ है, अभी dub smash नहीं कर सकते. So then he put that and we were all together. So we just danced to Prem Ratan Dhan Payo, and it was good fun. I think it was very enjoyable, but it was just impromptu. He just called in the night and I'd missed the call, then he called and then we called back and said, चलो हमसे पहले करते हैं. So it was a competition, कौन पहले करेगा वो जीत गए 1 मिनट से. We were actually it was like that because we were all having dinner and Shahrukh sir, we have to do it before these guys do it, and हम लोग upload कर रहे थे और वो it's going टिकट इससे उनका आ गया. हम लोग जिधर थे हमारा connection थोड़ा सा तो उनका 1 मिनट पहले आ गया. But I think ours was better. What do you feel? हाँ? हाथ में क्या है ये? अच्छा ओके सर. It's a selfie stick.
खुद का एक्सप्रेशन नहीं रिकॉर्ड कर रही है ना कि शाहरुख सर कुछ बोले और ब्लश पे ये Sir, just now, you know, Kajal ma'am just shared her kids' reaction. What was your kids' reaction that you guys are coming back together after a long time? How excited are they to see you? No, I doubt it. आपका reaction. अब्राम हमने रोहित ने हमको एक रात को सबको सारी टीम को बुला के रोहित ऐसा करते हैं पूरी टीम 220 पीपल वी सिट डाउन जब हम रैप करने वाले होते हैं कि पूरी फिल्म जितनी एडिट हो गई होती तो रोहित ने रात को फिल्म दिखाते हैं तो उस वक्त अब्राम भी हैदराबाद में था एंड एक दो जगह पे जो रोहित बता रहे थे बहुत सीरियसली और जेन्युइनली कि बहुत मुश्किल होते हैं स्टंट्स ऑब्वियसली मैंने नहीं किया है लेकिन उस स्टंट के अंदर एंड में थोड़ी सी चोट मुझको लगती है और तो वो ही थॉट इट्स बिकॉज ऑफ काजोल बिकॉज वो भी उस सीन में है तो इसको देख कर कहना पापा टूट गया तो ही वॉज वेरी डिस्टर्ब विद हर तो उसका मुझे मालूम है उसको ये जो हमारा मिलन है उसको ठीक नहीं लग रहा है उसको लग रहा है अगर काजोल के साथ आएगा तो बाप टूट जाएगा लेकिन पिक्चर अच्छी लगी उसको Kajal, were your kids also on the set? They came for a little while. They came for a day or two, but they didn't stay very long. But in Bulgaria, they were there for about 15-20 days. Yes. और हम लोग इतना एक्चुअली साथ में शूटिंग कर रहे हैं 200 दिन के साथ 200 दिन से 2-4 बच्चे तो हमने आपस में भी कर लिए चेन्नई की शूटिंग कर रहा था मेरा शोल्डर एक्चुअली ब्रोकन था आई वेंट इनटू अ सर्जरी एंड वी शॉट 12 days all his fighters his team you know when he talks about the team of action directors that he has and the boys and girls who work on it they are extremely safe मुझको एक बार भी हालांकि मुझे लगता नहीं जितना एक्शन इस फिल्म में मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया इसमें कुछ 7-8-9 एक्शन सीक्वेंसेस हैं and we all know it And whichever set you go on, you hear reports that Shah Rukh has hit his shoulder or hurt his knee or something like that. So he's not managed that on this film at least. not at all and even the cast stunts that Rohit talks about actually वो सारी extreme safety करने के बावजूद भी I know that how difficult because कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी गलत हो सकती है और होती है और दुनिया भर में होती है सिर्फ यहीं पे नहीं but I think his team is the safest team that whatever little experience I have of action I think is the safest team personally I've never been hurt a little मुझे काजल ने ज़्यादा मारा है रोहित ने कम मारा है and genuinely it's one of the most fantastic teams and his other teams which he joins in and makes a whole group I think it's one of the most safe team to do action you feel encouraged कि जब ये 10-20 गाड़ियाँ उड़ रही हैं ऐसा हम बात नॉर्मली करते हैं उसकी but when he's doing it we know very clearly that we are in an international boundary or a different country and we are as good as anyone else in the world so I think kudos to him. I want to just add one thing in this that this is the first time I'm doing action, so I was a little nervous to do this type of action and stuff, and I was supposed to do a flip off a table, and I was very enthusiastic about it, so I told Rohit, so that मैं कर लूँगा, I'll do it, and he said no, I won't let you do it, just put the padding, I won't take the shot only, so why are you arguing? So I put the padding, I said मैं कर ही लूँगा, I was being confident, and I did hurt myself. No, and he's very good. Even in the romantic song, he said put the padding.